Hello everyone, welcome in Others Group of Education platform of online classes. So student, in previous video we have started class 11th NCERT Biology. Yesterday we have started first chapter, that is living world. In this chapter we have studied about introductory segment of this chapter. Then I told you what is the meaning of life, what is the meaning of living organization. I told you in living organism so many type of characters are present, and these character defined or determined about living organism. For example, growth process, reproduction process, metabolic activity, self consciousness, cellular organization. So these characters are responsible for determination of living organism. Then student, in previous video we have started the first topic, the first character, that is growth. What I told you, growth is a unique character of living organism in which the length of body, the mass of body and the number of organism it increase. Now today we will start what is the main region of growth process, why growth process occur in living organism, एनिमल्स में, प्लांट्स में ग्रोथ प्रोसेस कैसे होती है. सो लेट्स बिगिन. सो टुडे वी विल स्टार्ट रीजन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस. व्हाट इज द मेन रीजन, how it occur. So बच्चों, the growth process in living organism occur due to cell division process. This point is very important. Due to cell division process. Now what is the meaning of cell division? You have studied in smaller classes that cells of body always divide and produce new cells, and these new cells are responsible for growth process. So bachcho, now today we will start what is the main region of growth process in living organism. प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ प्रोसेस कैसे होती है, कैसे बॉडी की लेंथ बढ़ती है, मास बढ़ता है. So first of all I will tell you some basic point. Have you heard about cell division process in smaller classes, in class 9th, in class 10th? क्या आपने सेल डिवीजन प्रोसेस का नाम सुना है? You have heard that in nature the body of all living organism, plant, animal, bacteria, human, the complete body it is consist of what? Cell. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसकी बनी होती है? सेल की. नाउ बच्चों, what is the property of these cell? Inside the body, these cells having capability to divide and produce what type of cell? New cell. बॉडी में जितनी भी सेल्स है वो हमेशा डिवाइड होती रहती है, and when the cell divide it always produce new cells. डिवाइड होके नई सेल बनाती है, and this complete process it is known as what?
cell division process. So what is the definition of cell division? A biological process in which cells of body divide and produce new cell. This complete process, it is known as what? Cell division. So bachcho, that is only the definition. Now in body, when new cells are developed, these new cells are responsible to increase the length, to increase the width and to increase the mass of the body. ये जो नई सेल्स बनती है, इन्हीं नई सेल से बॉडी की लेंथ बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी, मास बढ़ेगी. So indirectly we can say that new cells are responsible for which process? For growth process. ये जो नई सेल्स बनती हैं, यही रेस्पॉन्सिबल होती है कौन सी प्रोसेस के लिए? ग्रोथ के लिए. So बच्चों, here we have completed the main region of growth. बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है? With the help of which process? Cell division. Now after this point, the next point, if I'm asking you, in nature, in plant body, the growth process always occur in complete life. प्लांट्स में जो ग्रोथ प्रोसेस है वो हमेशा होती रहती है. बट इन एनिमल द ग्रोथ प्रोसेस अकर अप टू ए सर्टेन एज. एनिमल्स में ग्रोथ प्रोसेस एक एज के बाद रुक जाती है. सो बच्चों, व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई इन प्लांट growth process occur complete life, why in animal the growth process takes place up to a certain age? So we will study this point. Let's see. So now we will start. What is the main region? So what I've told you that in plant body, जो plants हैं, growth process occur, takes place in complete लाइफ साइकिल. पूरे जीवन में ग्रोथ होती रहती है प्लांट्स में. कंप्लीट लाइफ साइकिल. सो बच्चों, व्हाट इज द मेन रीजन? इसका रीजन क्या है? सो लेट्स सी. बिकॉज इन प्लांट सम सेल्स आर प्रेजेंट. And what is the name of the cell? Meristematic cells. And these cells having high cell division capability. High cell division capability. What is the meaning of that? It means these cells divides very fast. ये फटाफट डिवाइड करती है. Divides very fast. Now common sense, फास्ट डिवाइड करेगी तो ये सेल्स क्या बनाएगी? न्यू सेल्स. And I've told you that new cells are responsible for which process?
growth process. So dear student, now we will start a interesting fact regarding to growth, that in environment, in mostly plant body, the growth process takes place, growth process occur in complete life cycle. नेचर में जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो ग्रोथ प्रोसेस है, हैव यू सीन दैट प्लांट की जो लेंथ है वो हमेशा बढ़ती ही रहती है. तो प्लांट में जो ग्रोथ प्रोसेस है वो पूरे लाइफ तक होती है. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट इज पॉसिबल. बायोलॉजी में क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा क्यों होता है. सो बच्चों, इनसाइड द प्लांट बॉडी सम स्पेसिफिक सेल्स आर प्रेजेंट. And what are the name of the cell? Meristematic cell. What is pronunciation? Meristematic. And these cells of plant body having high cell division capability. Plant की जो cell होती है, इनकी जो cell division capability है, ये काफी ज़्यादा होती है. What is the meaning of that? It means these cells divides very fast. प्लांट की बॉडी में ये सेल फटाफट डिवाइड करती है. अब दिमाग लगाओ, व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड्स वेरी फास्ट, ड्यू टू दैट दीज सेल ऑलवेज प्रोड्यूस न्यू सेल्स. ये वाली सेल हमेशा नई सेल बनाती रहेगी. एंड दीज न्यू सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विच पर्पज? फॉर ग्रोथ पर्पज. सो बच्चों, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for NEET, for competitive exam and for examination point of view. Question आ सकता है, why plant growth always takes place in complete life cycle? So what is your answer? आपका आंसर क्या होगा? Because in plant body which cells are present? Meristematic cell that are responsible for the development of new cells. So बच्चों, we have completed this point. Now we have to elaborate about the growth process of animal body. हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है वो एक एज के बाद रुक जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन बॉडी द ग्रोथ प्रोसेस स्टॉप्स आफ्टर द एज ऑफ 21 to 22 ईयर. हमारी बॉडी की जो लेंथ है 21 ईयर के बाद स्टॉप हो जाती है. वाई टकर, क्यों प्लांट की तरह हमारी बॉडी में हमेशा लेंथ नहीं बढ़ती है? व्हाट इज द मेन रीजन? सो लेट्स सी. अभी हम देखते हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स. सो व्हाट इज द पॉइंट? इन एनिमल्स the growth process, एनिमल्स की बात करें तो बच्चों, ग्रोथ प्रोसेस अकर टेक्स प्लेस अप टू सर्टेन एज. अप टू सर्टेन एज, एक एज तक ही. Why? Because in animals the cells of body lose its division capability. डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को ये सेल्स लूज कर देती है, खो देती है. डिवीजन कैपेबिलिटी. ड्यू टू दैट अब डिवाइड ही नहीं होगी. इट मीन आफ्टर एट ए सर्टेन एज नो ग्रोथ प्रोसेस रुक जाती है. नो ग्रोथ प्रोसेस. So बच्चों, after the plant point, now we will study about the animal point of view.
in animal body the growth process takes place occur up to a certain age. नेचर में जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है एक एज तक ही होती है. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन एनिमल्स द सेल्स ऑफ बॉडी में जो सेल्स है लूज इट्स डिवीजन कैपेबिलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूज इट्स डिवीजन कैपेबिलिटी? बॉडी की जो सेल्स है एक टाइम पीरियड के बाद अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी को खो देती है. इट मीन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड द सेल्स ऑफ बॉडी आर नॉट कैपेबल टू डिवाइड. अब ये सेल डिवाइड नहीं हो सकती है, डिवाइड ही नहीं होगी. इट मीन सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस न्यू सेल्स, and when new cells are not produced it mean no growth process. So बच्चों we can say that in animals due to losing division capability the growth process occur up to certain age. So here in this chapter we have studied the growth process of plant and the growth process of animal, and we have completed the first unique character of living organism, that is growth. Now after the growth we start the second character of living organism, that is reproduction. So let's see. अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की. इट्स ए वेरी यूनिक कैरेक्टर. सो स्टूडेंट, नंबर 2 कैरेक्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन, एंड यू हैव स्टडीड दिस पॉइंट इन क्लास 10th in previous class. Reproduction, very important process of living organism. It is a process in which what? Living organism produce their, क्या बनाते हैं living organism? Produce their offspring or next generation. And बच्चों, in simple words we can say that living organism produce organism like itself, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म. सो नाउ बच्चों, द सेकंड कैरेक्टर ऑफ लाइफ, इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. यू हैव सीन दैट इन नेचर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव. प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई. And these living organisms having capability to produce the organism like itself. नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके पास कैपेबिलिटी होती है, पावर होती है अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाने की. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स ऑलवेज प्रोड्यूस न्यू प्लांट, एनिमल्स प्रोड्यूस एनिमल्स, द ह्यूमन स्पीसीज प्रोड्यूस द न्यू ह्यूमन स्पीसीज. So बच्चों, we can say that reproduction is a process in which living organism produce organism like itself. अपनी कॉपी बनाता है, ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं, रेडी करते हैं. और we can say that it is a biological process in which organism produce their offspring. What is pronunciation? Offspring. ऑफस्प्रिंग किसे बोलते हैं? नेक्स्ट जनरेशन को, अगली पीढ़ी को. सन, डॉटर, जो बच्चे होते हैं, न्यू ब्रीड प्रोसेस है.
So it is a biological process in which organism produce offspring और next generation अपनी अगली पीढ़ी बनाना. This complete process is known as what? Reproduction process. And बच्चों, this reproduction is very important because without reproduction life is not possible. The life continue on earth through reproduction process. जिस दिन अर्थ पे रिप्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसी टाइम लाइफ रुक जाएगी, नई जनरेशन नहीं बनेगी. सो बच्चों, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट बेसिक पॉइंट you have studied in class 9th, in class 10th, in smaller classes, that how many types of reproduction are present. Any idea? So reproduction process is divided into two categories, asexual reproduction and sexual reproduction. Let's begin. So student, now we will start the new topic, that is types of reproduction. And you have studied in smaller classes that this phenomena, it is divided into two categories. Number one, asexual reproduction. Asexual reproduction. And second is sexual reproduction. Sexual reproduction. So बच्चों, these are only the names. Now we will start one by one. And first of all, we will start which category? Asexual. Biology is very easy. Catch the word and make the definition. The word A, it means absent. The word sexual, it means sex. And on the basis of sex, two factors are present. One is male sex, and बच्चों, the second is female sex. So what is the meaning of asexual reproduction? It is a reproduction in which male and female both sexes are absent. You see the first point, both sexes are absent. It means in this reproduction only single parent is involved. Only single parent is involved. Okay. So now student, we start the new process, that is types of reproduction. On the basis of parent involving, how many parents are involved, single or double, इस basis पे this reproduction mechanism is divided into two categories. Number one, asexual reproduction. Number two, sexual reproduction. So these are only the names. Now we will start one by one, and first of all we will start asexual reproduction. You have studied this topic in class 9th. Okay, sir, what is the meaning of this process? So catch the word asexual. The word A, it means absent. The word sexual, it represents sex. And बच्चों, on the basis of sex,
two sexes are present. The one is male sex and second is female sex. A mean absent, sexual mean sex. तो definition क्या बनेगी? A reproduction in which both sexes are absent. It means male and female do not contribute in this process. इस reproduction में न तो male की requirement है और ना ही female की requirement है. It means in this reproduction how many parent is involved? कितना organism involve होता है? Single. एक अकेला organism अपनी offspring बना लेता है, अपनी next generation बना लेता है. This reproduction is known as what? Asexual reproduction. Simple words में बोलें, a type of reproduction in which single parent is involved. Single living organism produce their offspring or next generation. एक अकेला organism अपनी next generation अगली पीढ़ी बना लेता है. This reproduction is known as what? Asexual reproduction. So बच्चों, that is only the definition. Now question is that कि sir what are the example of this reproduction? कि nature में ऐसे कौन कौन से organism हैं जो अकेले ही reproduction को perform करते हैं. So let's see. So बच्चों, asexual reproduction mainly present in lower organism. Lower का meaning है small organism, जो छोटे organism है. For example, बैक्टीरिया, नाम सुना होगा आपने, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, फंजाई, एटसेट्रा. So बच्चों, this asexual reproduction mainly present in lower organism. Nature में जितने भी छोटे organism हैं, single cell organism, unicellular organism, जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है. You have studied in smaller classes bacteria, amoeba, paramecium, yeast, fungi. So these are the example of organism in which reproduction is present? Asexual reproduction is present. It means these organisms produce their offspring or next generation alone. ये organism अकेले ही अपनी next generation बना लेते हैं, अकेले ही अपनी offspring बना लेते हैं. यहाँ दो parent की requirement नहीं है. So बच्चों, we have completed about asexual reproduction. Now we will elaborate the second category of reproduction, that is sexual reproduction. So let's see. So now the second category of reproduction, that is sexual reproduction. What is the meaning of this process? Catch the word sexual. It means sex.
एंड टू टाइप ऑफ सेक्स, अभी बताया बच्चों मैंने आपको, द वन इज मेल सेक्स एंड द सेकेंड इज फीमेल सेक्स. It means in this reproduction sex is involved. In simple word we can say that in this reproduction how many parents are involved? Two parents. अब कैसे होता है ये? Mainly it is present in develop organism. Develop organism, for example plants, the higher plants, then animals, and also in some fungi. Okay. अब होता कैसे इसमें? इन दिस प्रोसेस द मेल प्रोड्यूस सम सेल दैट इज मेल गैमेट. फॉर एग्जांपल एनिमल्स की बात करें हम, स्पर्म. ओके. द फीमेल प्रोड्यूस फीमेल की बॉडी में क्या बनता है? फीमेल गैमेट. एनिमल्स की बात करें, ओवम, एग सेल. ओवम, इट इज आल्सो नोन एज एग. स्पर्म एंड ओवम फ्यूज विद ईच अदर, आपस में फ्यूजन होता है इनका, एंड ए सेल इज प्रोड्यूस, सिंगल सेल, दैट इज zygote. Now this zygote develops into embryo और embryo से एक नई लाइफ, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू लाइफ. So बच्चों, now we start second category of reproduction, that is sexual reproduction. It is just opposite to asexual reproduction. ये बिल्कुल अपोजिट है. The word sexual mean sex, male and female. It mean in this reproduction sex are involved. It mean how many parents are involved? Two parent. One is male parent and second is female parent. दो parent मिलके अपनी offspring बनाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं. सच ए रिप्रोडक्शन, इट इज नोन एज व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. सो बच्चों, दैट इज ओनली द डेफिनेशन. सिंगल पेरेंट होगा एसेक्सुअल, टू पेरेंट्स होंगे सेक्सुअल. नाउ आफ्टर द डेफिनेशन द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेचर में वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं? सो बच्चों, दिस रिप्रोडक्शन जनरली प्रेजेंट इन डेवलप ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म डेवलप है, विकसित है. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एंड सम फंजाई. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो बच्चों, डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गए. नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस. ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है? सो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बॉडी ऑफ मेल, इन द बॉडी ऑफ फीमेल, some cells are produced, some specific structure are produced. जब ये रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल की बॉडी में कुछ सेल्स बनती है. इन द बॉडी ऑफ मेल विच स्ट्रक्चर इज डेवलप? मेल गैमेट. इन द बॉडी ऑफ फीमेल विच स्ट्रक्चर इज डेवलप?
फीमेल गैमेट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th क्लास में आपने इनके बारे में सुना होगा. एनिमल्स में एग्जाम्पल्स की बात करें, द मेल गैमेट एग्जाम्पल इज स्पर्म दैट डेवलप्ड इन टेस्टिस ऑफ एनिमल, सेक्सुअल ऑर्गन. फीमेल की बात करें, इन फीमेल बॉडी ovum is produced, that is also known as egg cell. So in the body of male and female, sperm and ovum is produced. ये बन चुके हैं. अब आगे क्या होगा? The sperm and ovum both are fused generally inside the female body. Female body के अंदर sperm fuse with ovum. And this fusion process, it is known as fertilization process. And after the fusion, a single cell is developed. Fusion के बाद कौन सी सेल बनती है? Zygote. And this zygote finally develop into embryo, the baby, and finally embryo is develop into what? A new life. एक नई offspring ready हो जाती है. So बच्चों, that is the general introduction of sexual reproduction, that male produce male gamete, sperm, female produce female gamete, ovum or egg both fuse with each other, zygote is developed, zygote develop into embryo and finally into the new life. So we have completed about the mechanism of sexual reproduction. So बच्चों, that is enough for today. In this video we have started some unique character of living organism. We have studied about first character growth, then second character reproduction. Two type of reproduction, one is asexual and second is sexual. In next video, in next lecture, we will study the third unique character of living organism, that is metabolic activity. Till then, stay at your home, be safe, be happy and don't forget to use mask in public places. अभी कोरोना गया नहीं है. Thank you all of you.